Okay, please silent. Please. So we left on the chemical bonding chapter. मैंने आपसे एक worksheet share की थी. I hope you have done that worksheet as well. ठीक है. Either tomorrow or day after, we'll do one more worksheet. Right? We'll do some questions too in the class, and then I'll take a test by the end of this week. Okay. The test will be regarding chemical bonding, states of matter, experimental techniques, atomic structure. Today we start off with the new chapter, the periodic table. Listen, please, very carefully. Screen सबको नजर आ रही है? Can everyone online see this? So we start learning. अब हमने ये तो आइडिया हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से एटम क्या होता है और फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है. अब आपको आइडिया है कि या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज गेन करते हैं या शेयर करते हैं टू एक्वायर स्टेबिलिटी. यहाँ आयंस बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट, व्हिच लीड टू द ऑक्टेट और द डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन. In this chapter, we learn that how these atoms of elements are arranged, right? So listen to my words very carefully. It's very interesting chapter, ठीक है? और मैंने कुछ बातें यहाँ पे ये भी करनी है कि how the chemical formulae are actually produced and how to write a chemical equation as well, right? So please make sure that you actually get my word, right? Let's start off with the story. देखिए, जो periodic table और फिर organic chemistry, they have few things in common. अब इसमें commonality क्या है? ये जो periodic में elements हैं, इतना तो पता ही होगा आपको. यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. Elements को scientists जो है वो discover करते रहे, right? और नाम रखते रहे. Sometimes random name sodium and sometimes name of the scientist manganese, Einsteinium, vanadium. Right? Even यहां तक हुआ कि इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ साइंटिस्ट को जेल हो गई. तो साइंटिस्ट जो व्हाइट कलर पीपल होते हैं उनको जेल हो गई. वो जेल के अंदर बैठ कर उन्होंने 8 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए, राइट? क्योंकि उस टाइम जेल्स बाहर से होती, वो तो स्टोन्स ले होती थी. वो स्टोन्स से निकाल एलिमेंट डिस्कवर कर लिए. और जो एलिमेंट डिस्कवर किया 8, जो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज लिखी एंड दे मेक अ स्मॉल बुकलेट. दैट नेम ऑफ द बुकलेट वाज द पीरियोडिक टेबल. फिर वहां से ये वर्ड कॉइन हुआ और फिर इवेंचुअली आज हम उसको पढ़ते हैं. जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, राइट, तो देयर वर सो मेनी वेज टू अरेंज देम. अब हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हो गए, ठीक है? आज हमारे पास रफली 108 एलिमेंट्स हैं. सोचिए आप 108 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद करना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए, आपके लिए, इवन साइंटिस्ट्स के लिए. चलिए यहां तो फिर 108 एलिमेंट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. क्या हम हर प्रॉपर्टी याद करते हैं हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की? ऐसे नहीं होता. We do generalize things. Okay, that's great. Silent. So basically I was telling you कि जब हम एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे तो तब कोई रूल नहीं था नाम रखने का और जैसे मर्जी अरेंज कर लें. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर कर रहे थे तो वहां एक रूल होता है नाम रखने का और उनको भी अरेंज करने का एक वे है. सिंस वो ऑर्गेनिक है, यहाँ पे द पीरियोडिक टेबल वी आर टॉकिंग अबाउट. तो गाइस रिमेंबर, okay, so basically I was telling you कि जब हम एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे तो तब कोई रूल नहीं था नाम रखने का और जैसे मर्जी अरेंज कर लें. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर कर रहे थे तो वहां एक रूल होता है नाम रखने का और उनको भी अरेंज करने का एक वे है. सिंस वो ऑर्गेनिक है, यहाँ पे द पीरियोडिक टेबल वी आर टॉकिंग अबाउट. तो गाइस रिमेंबर,
Okay. So basically, since we have discovered hundreds of elements, right? So हर element की property याद करना, it's very tedious, very monotonous for you, us, for scientists. तो हमने फिर elements को arrange किया in a certain manner कि हम उनकी properties अच्छी तरह याद कर सकें. That arrangement, as simple as that, is called as the periodic table, which appears more or less like this. पहले इसकी arrangement बहुत फर्क रही है. ये तो मेंडलीव का हम पढ़े ना, तो पहली arrangement I'll discuss with you later. लेकिन अभी के लिए the most modern and the recent arrangement is like this, which you might have seen since very start. So please stay very attentive. Please, very attentive. The very first member of the periodic table is hydrogen, as you might have seen. Then we have helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. वाह, ये तो मुझे impressed. क्या मतलब याद किया? Carbon everywhere, nitrogen also here, oxygen to make a heat for it. You have to learn at the same sodium to soluble. Wow. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. All right. So basically, online. So basically, in our syllabus, the elements are from hydrogen 1 as atomic number to calcium 20. First, of the 20 elements are there in our syllabus, as we discussed the atomic structure as well, right? इसके beyond जरी बात the elements हैं, right? लेकिन हम ज़्यादा discussion करते हैं up to 20 elements. I hope you know from the atom chapter, subscript stands for the atomic number and the superscript stands for the mass number, right? अगर hydrogen का 1 है, let's say यहाँ पे hydrogen का atomic mass 1 होता है, helium का atomic mass is 4. I think lithium का atomic mass is 7. Are you seeing that कि atomic number तो consecutive है, लेकिन मेरे ख्याल से atomic mass का कोई sequence नहीं है add या increase होने का. That's why we say that elements in the periodic table are arranged in order of increasing atomic number. So elements in the periodic table, please, are arranged according to the increasing atomic number. Not atomic mass. Atomic mass will randomly बढ़. Please remember the vertical arrangement of elements is called as a group number. And the horizontal arrangement of elements is the period number. Yes, please. Yep, I can go back. Is it fine? Excuse me, sir. Ji, bacha. Sir, when will you discuss the chemical bonding worksheet with us? It's
either tomorrow or day after. Okay, sir. Thank you. No problem. Now, guys, everyone, please. So basically, जो group, so it means that ये हो गया first group, second group, third group, fourth group, fifth group, sixth, seventh. The last one, आप इसको eighth group कह दिया, जरूर पढ़ेंगे. Both are absolutely fine. Some students may call it as the eighth group, or some may call it as zero group. So both terms are correct in both O-level and IGCSE. और चूंकि हर ग्रुप का नाम है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम वहां पे हम ग्रुप्स ही बनाएंगे. जिस तरह वहां पे हर ग्रुप का नाम है एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी हर एक का नाम है. So basically first group are the alkyl metals. Second group are the alkaline earth metals. The third group is the boron family. Fourth group is the carbon family. Fifth group is nitrogen family. Sixth group is oxygen family. Seventh group are halogens. And eighth group are noble gases. So basically first group, second group, third group, fourth group, fifth, sixth, seventh, eighth. अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ ना O और IGCSE के, और अगर आपने कोई recent past papers देखे हो, तो जो मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ किस तरह के सवाल आएंगे और O भी आ रहे हैं, IGCSE में आ रहे हैं और LL में भी आ रहे हैं. अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस आपको कहता है कि you should know the chemical reactions of group 1, group 2, group 7. सिलेबस और ग्रुप्स की बात नहीं करता. But when you open the paper, do you see elements from third group, fourth group, fifth group, and sixth group as well? तो हमने कुछ बातें वहां भी करनी है, right? This is what we've been seeing in the papers throughout in these years, right? And students have been missing out. क्योंकि आपकी बुक्स पे लिखा ही नहीं हुआ. ये जो सारे elements हैं जो group 2 और group 3 के दरमियान लाया करते हैं, these elements, they are all transition metals. I'm moving on. Vertical, though, groups. Horizontally, please remember, I hope you know as well, hydrogen and helium. ये hydrogen or helium. This Sir, is it so possible hydrogen. the question Jiro Mesa, please come again. Sir, is it possible इनकी properties पे question आ जाए? आप कह रही हैं group 3, 4, 5 से के like group 1, 2 और 7 के? 1, 2, 7 के. उनके तो आएंगी. It's a part of your syllabus. Okay, okay. Thank you, sir. Okay. No problem, Micho. Now, please, hydrogen and helium, this classifies as the first period, and then lithium से फिर आपका second period, फिर third period, and the famous MCQ of both O and IGCSE is that transition metals start from the fourth period. And then, of course, the story goes on further. Sir, we can't hear you. Sir, you're not audible.
Ready? Sir, we can't hear you. All right, guys, I hope you all can hear me now. I think there was a slight connection problem. Yes, sir, we can hear you. बेटा इब्राहिम हौसला. Okay. Okay, so basically across the period, the elements convert from metal to metalloid and finally into non-metal. What is actually a metal? I hope you remember from the atomic structure and the chemical bonding chapter कि metals कौन से element जो कि electron lose करते हैं form positive ions. So basically metals, they tend to lose electrons and form positive ions, whereas non-metals, so they tend to gain electrons. Sir, can you repeat the method And form negative ions. So when we ask in the paper what is actually a metal, so metal, it will tend to lose electron and form positive ion, whereas non-metal will tend to gain electron, form negative ions. आगे चूंकि redox chapter आने भी वाला है, loss of electron को oxidation कहते हैं, तो metals space का मतलब है oxidize होते हैं. और चूंकि आगे redox chapter आएगा, मैं further बताऊंगा, right? जो चीज oxidize करती है, it's called as reducing agents. That's why, please remember, these metals are very good reducing agents. And since non-metals, they gain electrons called as reduction. They reduce, so they tend to act as oxidizing agents. और आपको chemical bonding से पता है, from the chemical bonding chapter, listen carefully. From the chemical bonding chapter, you know that whenever a metal will interact with a non-metal, तो जो metal will tend to lose electrons, non-metal will gain electrons, और I think ions बनेंगे और ionic bond बन जाएगा. Is that so? Let's see some formulae of ionic compounds. हौसला भाई, हौसला, हौसला. Silent. अब नहीं बोलना आपस में, ठीक है? लास्ट चांस दिया मैंने. So let's see. सर, आपकी आवाज फिर से चली गई.
I hope हमें recording मिल जाए because I can't hear him properly. रिकॉर्डिंग क्लास की होती है, क्लास में ही नहीं कुछ नजर आ रहा तो रिकॉर्ड क्या होगा? Ouch. आज तो record हो रहा है ना, तो वो तो हमें send हो जाएगा. नहीं, जो रिकॉर्ड हो रहा है वो वही हो रहा है जो अभी मीटिंग में हो रहा है। मतलब अगर सर की अभी आवाज नहीं आ रही है, मेरे रिकॉर्डिंग में नहीं है। मैं इनको कॉल कर रही हूँ, कॉल ही पिक नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूँ? और ना CLC वाले उठा रहे हैं. जी बच्चा, I think that Zoom disconnected. I think there is some they lose one electron for stable configuration. That's why you've been learning in the atom chapter that group 1 पे charge is +1. Similarly, group 2 is +2, group 3 is +3, group 4 it can lose 4 or gain 4. Like group 5 is -3, group 6 is -2, group 7 is -1, and finally noble gases have no charge. Why? Because they neither lose or gain electrons. Okay, and between metal and non-metal there is always an ionic bond. We know from the chemical bonding chapter. जल्दी से मुझे कुछ आपने compounds बताने ताकि मैं story start करूं आगे further. ठीक है, क्योंकि I have to go in detail. तो detail में जाने से पहले मुझे पहले ये बातें करनी है आपके साथ, क्योंकि we ask you these things in the examinations too, in one way or the other. So please stay focused, everyone. इसके पीछे रीजन है बहुत. तो डीटेल में जाने से पहले मुझे पहले ये बातें करनी है आपके साथ, क्योंकि we ask you these things in the examinations too, in one way or the other. So please stay focused, everyone. Let's say मैं एक example लेता हूँ, please. This is lithium and this is nitrogen, right? If I say you write the formula of lithium nitride, I hope you know from the atom chapter as well. मैंने ये बात वहां भी की थी, मैं इसलिए दोबारा बात कर रहा हूं कि जब मेटल मेटल आयन आता है तो उसका नाम वही रहता है. लिथियम एटम में लिथियम आयन भी होता है, लेकिन when the non-metal forms an ion, तो its name changes. If it's nitrogen as a non-metal atom, after gaining 3 electrons, it becomes nitride. IDE लग जाता है non-metal के आगे. I hope you know from the atom chapter. इसलिए अगर आप गौर कीजिएगा, जब मैं नाम लिखूंगा फॉर्मूला का तो non-metal IDE लगा होगा हमेशा, right? तो लिथियम पे चार्ज क्या है? It is +1. Nitride is -3. So the formula is lithium nitride, Li3n. So please remember, when a metal forms a metal ion, its name does not change. But when a non-metal forms a non-metal ion, its name changes. और उसके आगे suffix पे IDE लग जाएगा. ठीक है, अब जरा very quickly please, जरा मुझे कुछ जो ना ऐसे compounds के नाम लिख दें please. ठीक है, लेकिन very quickly. इसके पीछे रीजन है बहुत.
Very quickly, please. Sir, can you explain this again? Sir, can you explain this again? I didn't understand. Sorry, Mirza, please come again. What are you saying? Sir, can you explain this again? Sir, can you explain this again? I didn't understand this. Okay, so basically I was saying that whenever we write the name of an ion, especially when we write the name of the ionic compound, so जरी बात है, it's between a metal and non-metal. So जो आपका metal होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस बात तो उसका नाम वही रहेगा. If it's sodium atom तो वो sodium ion भी नाम भी वही है. तो atom और ion में नाम में फर्क नहीं आता. लेकिन in case of a non-metal, if it's oxygen atom, right? लेकिन after gaining electron it becomes oxide, right? Fluorine से fluoride, chlorine से chloride, nitrogen से nitride, phosphorus से phosphide, right? तो non-metals के आगे नाम के आगे IDE लग जाता है. Please quickly write the formulae. You have to be quick, please. सर जो आपने ये पीरियोडिक टेबल पे लिखा हुआ है सर, ये रेड लाइन के नीचे वाले है. नहीं, ये बेसिकली रेड लाइन इज एक्चुअली फॉर मेटलॉइड, लेकिन मेटलॉइड्स अभी भूल जाएं. सर वैसे 8 ही लगता लाइक नाइट्रेट या सल्फेट वगैरह. एक सेकंड, ये जरा पहले नाम लिख ले कंपाउंड्स के, तो फिर अभी आई विल टेक योर क्वेश्चंस. There we go, please. Just to identify, like a star and जी बेचा. Yep. हमेशा फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिखना होता है. Okay, are we done, everyone? G, shall we start, everyone? So basically, the next is calcium phosphide. So basically, the calcium is Ca plus 2, phosphorus is minus 3. So I think Ca3P2, it's a calcium phosphide. Ca3P2 का मतलब पता है क्या? अब तो वैसे आपको, by the way, आपने केमिकल बॉन्डिंग और एटम पढ़ लिया है. Ca3P2 का मतलब क्या है? मुझे जल्दी से बता दें, क्योंकि आगे redox की एसेंस है. redox के इलेक्ट्रॉन समझ तभी है जब ये बात समझ आएगी. अगर if some students are weak in redox, this means you're weak in this, right? क्योंकि ये उसका prerequisite है. मुझे बताएं Ca3 और P2 ये फॉर्मूला है आयोनिक कंपाउंड का. इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए हैं टोटल? कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? How many electrons are being involved in this reaction? सोच के जवाब दें. 6. यार देखिए, एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 कैल्शियम है, तो टेक्निकली 3 कैल्शियम मींस के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं. एक फास्फोरस 3 गेन करता है, तो 2 फास्फोरस है, तो 6 गेन कर रहे हैं. I told you in the chemical bonding chapter कि electron loss should be equal to electron gain. फिर जाके compound बनता है, वरना आयन बन जाता है. जब भी compound बनेगा तो electron loss gain equal होगा. अगर मैं कहता हूं lithium nitride का formula is Li3n, तो lithium एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. 3 का मतलब है lithium का कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. उसके अगेंस्ट 1 नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 गेन करता है, तो it's Li3n. Similarly, if I say magnesium carbide, so it means Mg is
plus 2 and C is minus 4. तो ये बन जाएगा Mg4C2. लेकिन हमेशा जब भी फॉर्मूला करते हैं फॉर्मूला सिंपलीफाई करके जाता है, तो सिंपलीफाइड वर्जन में क्या होगा, इट विल बी Mg2C. सोडियम सल्फाइड पे आ जाए तो सोडियम Na+1 and S is -2, so it's Na2S, सोडियम सल्फाइड. ये तो हो गए between metal and non-metal. एक मेटल और एक non-metal, तो simple ionic compounds. If you remember chemical bonding chapter, तो मैंने आपसे वहां पे एक और डिस्कशन भी की थी, and it was actually polyatomic ions की. तो ये polyatomic ions याद रखने please, right? We'll be frequently asking you. So I'm again writing those ions, right? Sulfate is SO4 -2. It's a polyatomic ion. Don't forget the valency in the formula of it. अच्छा, कुछ students पूछते हैं -2 लिखेंगे, 2- लिखें. I mean, please for God's sake, it doesn't matter. क्या हो जाना है, सही लिखें बस. Sulfite, SO3 -2, sulfite. Nitrate, NO3 -1. Nitrite, NO2 -1. ये तो एप्पल का है, ये तो आईफोन का है. मुझे आईपैड पे चाहिए, वो सी टाइप होता है. जी सर, ये जो सल्फेट से सल्फाइड बनता है, यानी वो रिड्यूस हो रहा है. या राइट. सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट. Phosphate is PO4 -3. Phosphite is PO3 -3. Carbonate is CO3 -2. And then we have a bicarbonate, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. It's HCO3 -1. Then we have ammonium, NH4 +1, and then we have hydroxide, OH -1. ये सारे नॉन मेटल्स हैं जो आपस में यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्ड किए हुए और उन्हें आयंस दिए हुए. ठीक है ना, सल्फेट, SO, I mean both are non-metals. I mean they're covalently bonded and it's an ion altogether. Now if I take the ionic compound which have these polyatomic ions, तो अगर मैं कहता हूं कि write the formula of this calcium, एक मैं करूंगा सिर्फ, तो it's calcium sulfate. तो calcium group 2 में होता है, तो Ca is 2 positive, sulfate SO4 -2, that then becomes calcium sulfate. I am writing some compounds. Please quickly write their formulae. Again, you have to be quick. Quick, please.
Sir. जी बच्चा। सर क्वेश्चन है एक सेकंड। आप लोगों ने कॉम्पाउंड लिखी? Just I have to hear his question. जी please come again with a question. सर मैंने पूछा था कि नाइट्रेट और नाइट्राइट बॉन्ड्स अलग नाइट्रेट और नाइट्राइट वगैरह बॉन्ड्स अलग होते हैं कोवेलेंट उस तरीके से हाँ डबल कोवेलेंट की स्कीम है ओवरऑल चार्ज जनरली फर्क होती है। ओवरऑल चार्ज। ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है श्री साले। Calcium sir. जी जी Calcium sir. Calcium sir. How did you know that they are four? जी बेटा please come again. Oh, I can truly understand. What I'll do is that I'll actually वो disconnect हुआ था, लेकिन automatically वो आपकी recording join हो जाएगी. I'll join that recording for you all. लेकिन मैं at the end of the lecture में एक आपको recap भी दूंगा ताकि आप लोग एक पेज पे आ जाएं. So that सर कैल्शियम फॉस्फेट का क्या problem is बन रहा है? stated. सर कैल्शियम फॉस्फेट का क्या बन रहा है? सवाल. Okay, so I shared the polyatomic ions with you, right? मैंने आपसे polyatomic ions share किए, फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ इनके जो compounds बना दें, जिनके मैंने नाम लिखे. जल्दी से बता दें कि इन compounds के नाम क्या हो, इनके formulas क्या होंगे basically, right? Okay, sodium nitrate. तो sodium तो group 1 में है, तो I think it's Na+1, right? ये तो हो गया Na+1. नाइट्रेट क्या होता है? तो नाइट्रेट इज NO3 -1. तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. याद रखिएगा कि इट्स एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड नाइट्रेटाइन. तो इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है एंड इन नाइट्रेट इज कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल. तो आपसे गेम्स की भी पूछते होते हैं कि सोडियम नाइट्रेट में आयोनिक बॉन्ड भी और फिर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है. आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड नाइट्रेट और नाइट्रेट के अपने अंदर इज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन N and O, राइट? Next is calcium phosphate. So calcium is 2 positive, phosphate is -3, so it becomes Ca3, it's PO4 whole twice, right? So it's calcium phosphate. Aluminium hydroxide means aluminium is +3 and OH is -1, so it is AlOH3. It's ammonium phosphate. Ammonium is NH4 +1. Phosphate is -3. So it becomes NH4 whole thrice and it's PO4. तो याद रखें कि अगर जो पॉलीटॉमिक आयन होता है बेसिकली अगर स्वैपिंग के ऊपर अगर कोई नंबर गेन करा तो it is always written in a bracket form, right? So it's ammonium phosphate. Although ये बातें मैंने एटम और बॉन्डिंग चैप्टर से कुछ रिपीट की हैं, मैंने अभी तक कुछ इतना नया नहीं पढ़ाया, राइट? इट वाज जस्ट दैट कि आप लोग एक फ्लो में आ जाए, एक सीक्वेंस में आपको पता हो कि हम एटम्स और केमिकल बॉन्डिंग से क्या पढ़ के आ रहे हैं. तो मैंने वो चीज एक मतलब रिकॉल करवाई है. I haven't taught you anything new yet, and now I'm starting off with it. Now guys, everyone, listen to this carefully. Now we know that elements are arranged in the form of groups क्योंकि जो elements एक group में लाया करते हैं उनकी chemical properties same होती हैं, पढ़ना आसान हो जाता है. So let's start off learning with group 1 in details. And now listen my words very carefully please. ठीक है? कोई ऐसा अभी तक मैंने पेपर नहीं देखा O level का और IGCSE का जिसमें इस चैप्टर से सवाल ना आया हो. मैंने तो अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा, राइट? तो इसलिए दिस चैप्टर कैरीज इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड फॉर एमसीक्यूज. ग्रुप 1 गाइस, ग्रुप 1 आर आल्सो कॉल्ड एज alkali metals. The members of this group are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So the people online,
जो चीज आई थिंक वो पीछे जूम कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहा, बेसिकली वो पार्ट्स वो थे जो कि मैंने एटम से दोबारा आपको पढ़ाए ताकि आप लोग फ्लो में आ जाएं. सो द एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, सो डोंट वरी, यू हैवंट मिस्ड अ लॉट. Group 1, alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. सारे metals हैं, ये सारे solids हैं at RTP. मेरी एक एक बात इंपॉर्टेंट है. In fact, they all are gray solids at RTP. ये सारे ग्रे सॉलिड्स हैं. हमने आपसे ये कलर्स पूछने हैं प्लीज पेपर में, तो याद रखिएगा. सेकेंडली, रिमेंबर दे आर सॉफ्ट मेटल्स. अच्छा, सॉफ्ट का मतलब है मैं इसको आयरन से कंपेयर कर रहा हूं. आयरन बड़ा हार्ड मेटल है, ठीक है, उसको तोड़ना मुश्किल है. अगर मैं उसके ऊपर नाइफ चलाऊं तो आयरन कभी नहीं टूटेगा. लेकिन अगर आप सोडियम को स्कैल्पल से काटें तो सोडियम विल बी इजीली, आई मीन इट कैन बी इजीली स्लाइस्ड ऑफ विद अ नाइफ. So remember, group 1 metals as well as group 2 metals are soft. Though jo group 2 are slightly harder, but they're also soft. So please remember, they are soft metals. So they are soft metals and they can be easily cut with knife. आई वंडर कभी आपने लैब में सोडियम को नाइफ से काटा कि नहीं काटा, लेकिन अगर आप सोडियम को नाइफ से काटेंगे ना तो अंदर से वो शाइनी अपीयर करता है एकदम, ऊपर से तो ग्रेइश होता है. द मोमेंट यू कट इट, स्लाइस इट, अंदर से इट्स एक्चुअली शाइनी. तो इट्स शाइनी व्हेन कट. रिमेंबर These group 1 metals, क्योंकि नॉर्मली मेरे ख्याल से नॉर्मली आपके ब्रेन में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ना नॉर्मली, if I say the word metal, तो शायद अगर मैं भी आपकी जगह पे, if I put myself in your shoes, right, तो इस लेवल पे शायद मैं भी सोचूंगा अगर मुझे कोई मेटल कहे तो मैं सोचूं अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा, बड़ा हार्ड होगा, बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बड़ी हाई डेंसिटी होगी. नॉर्मली a student thinks like this. Some things are right, they are good electrical and heat conductors. They are good electrical and heat conductors. Why? Because they have free electrons. तो ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आफ्टर ऑल मेटल्स हैं, और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हीट कंडक्टर्स भी हैं. Why a metal conducts heat? Reason is free electrons again. Those free electrons move and they carry energy. G. Sir, I have a question. Sir, I have a question. Thank you. Sorry, it's solid. Thank you. Sir, a question मेरे पास. Now, since they have free electrons, so they're all good conductors of electricity. Moreover, याद रखिएगा, आपके periodic table में ज्यादा metals ही हैं, बहुत कम नॉन मेटल्स हैं. And out of all metals, group 1 are the most. So they are most reactive metals. सर रिपीट कर दें आपके पास. Sir, I have a question. मैं भी अभी हाँ अभी उस बनाने लगा हूँ. एक सेकेंड. वहां कैसे शिफ्ट हो जाता है? एक सेकेंड प्लीज ऑनलाइन पीपल, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक दैट के why cannot I connect it to my iPad when I'm listening? Basically, they're more. मैंने पूछा था sir, isn't cesium It's a gray metal. golden? Even francium. वैसे मैं आपको वैसे भी प्लीज मैं आपको कैसे बताऊं, फ्रांसियम वैसे भी मैन मेड मेटल है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंसान ने बनाया है. सीजियम तक इट्स नेचुरल, फ्रांसियम इज मैन मेड मेटल बाय द वे, लेकिन दे ऑल आर ग्रे बाय द वे. ओके Okay, sir. Okay, so basically they're most reactive metals in the periodic table. Moreover, अगर स्टूडेंट सोचो ना कि जो मेटल्स बड़े डेंस होते हैं, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ग्रुप 1 मेटल्स आर वेरी लेस डेंस मेटल्स, सो दे आर लेस डेंस मेटल्स. इनकी डेंसिटी लो होती है.
और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। अब सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट इज 98। अगर आप सोडियम डाल देना, इफ यू ऐड सोडियम इन बॉइलिंग वाटर it will melt. Your water boils at 100, right? So group 1 metals have low melting points. Yeah. और since सारे group 1 में है, so they all have a charge in oxidation state of positive 1. अब जरा यहां पे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश करते हैं। वहां पे बिकॉज हम आपसे पेपर में बहुत स्ट्रेट में पूछते हैं, राइट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1, राइट 1 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1, राइट? लेट्स क्लासिफाई देम। so जी, first they all are gray solids at RTP. It's a physical property. I'll write, P and C, right? So P means physical and C means chemical. They are soft metals and they can be easily cut with knife. It's a physical property. They are shiny when cut, physical property. They are good electrical and heat conductors, physical property. They are most reactive metals, right? That's a chemical property. They are less dense metals, physical property. They have low melting points, physical property. They all have an oxidation state of positive 1. It's a chemical property. और मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब एग्जाम में ये सवाल आ जाए ना कि write 1 chemical property of group 1 metals, तो फिर आपने ये लिखी आनी है। ये लिखिएगा कि they are most reactive metals. I mean, for God's sake, I mean, what's the chemical property in it? वो तो इंफॉर्मेशन है ग्रुप 1 के बारे में, ठीक है? तो अगर हम आपसे पूछे ना write 1 chemical property of group 1, so please do write they all have an oxidation state of positive 1 G. Okay, so people online, one student has asked a question that what's the difference between oxidation state and valency? Oxidation state is normally जो आगे प्लस वाली होती है, +1, +2, +3 are oxidation states, क्योंकि oxidation means loss of electron. Electron lose करके ये charge आ गया, तो oxidation state. जो electron gain करके charge आता है, it's normally called as valency. तो आप गौर कीजिए, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो जो आगे पॉजिटिव वाले हैं उनको मैं ऑक्सीजन स्टेट बोल रहा हूँ और जो नेगेटिव वाले उनको मैं वैलेंसी बोल रहा हूँ। Okay, so once we know what these facts are, idhar hi, let's see some trends down the group 1. तो कुछ यहां पे जरा ट्रेंड्स भी ऑब्जर्व कर लेते हैं डाउन द ग्रुप। भूले नहीं है प्लीज। रिमेंबर, down the group, melting point decreases. So down the group, density increases क्योंकि mass बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि density is mass or volume, तो atomic mass बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए normal density down the group increases. Third, reactivity increases. क्यों? क्योंकि size of atom increases. Electron जल्दी lose हो जाता है. That's why we say in chemistry that francium is the most reactive metal in the periodic table. एक तो ग्रुप 1 में है, ऊपर सबसे नीचे है। ग्रुप 1 वैसी मोस्ट रिएक्टिव है और डाउन ग्रुप रिएक्टिव करती है, तो फ्रांसियम तो बहुत रिएक्टिव है। आपकी फिर भी आवाज, तो फ्रांसियम is considered as the most reactive metal in the periodic table.
All right. अब मुझे बताइए यहां तक की बात unclear. Anything unclear at the moment? Sir, Anything? sir, I have a question. Ji, please go on. Sir, I have a question. In तेरे metals, आपकी there आवाज are बहुत लैग three कर रही है in तेरे metals, आपकी there आवाज are बहुत लैग three कर रही है आवाज लैग कर रही है. It may be the connectivity issue, maybe. I'll share the lecture with you all as well. Okay. Ji, Bacha, you had a question? The other guy? Sir, in metals, there are three D